morning, students. So welcome to our new lecture. From this particular lecture we are going to start learning a new chapter, that is chapter number 5 of standard 8 mathematics. So we are going to start this particular chapter, that is expansion formula. Okay, so we will have some basic first. Okay, we will study some basic formulas of expansion. So in the previous classes you have been taught this particular formulas. So one of the basic expansion formula, that is a plus b bracket raised to square is equals to a square plus 2ab plus b square. Okay, so this is the first expansion formula. Okay, it is very basic for you. What is the formula? A plus b bracket raised to square is equals to a square plus 2ab plus b square. Now look at the following formula. What you will see, one of the term, okay, is separated in three terms. Okay, there is one term which is represented inside a bracket. That particular term has been dissolved into three separate terms. Okay, सो a प्लस बी जो है वो हमारा कंप्लीट एक टर्म था, उस टर्म को हम लोगों ने क्या किया है, तीन सेपरेट टर्म्स में डिवाइड किया है. तो a स्क्वायर, 2ab और b स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग दो डिफरेंट नंबर्स के एडिशन का स्क्वायर जो है उसको एक्सपांड कर सकते हैं. ओके, देन देयर इज अनदर फॉर्मूला दैट वी नो. नाउ a is going to be there, b is going to be there. The only difference in the formula will be that instead of plus sign we will have a minus sign between the terms. So a minus b bracket is to square. So what will be the answer to this expansion? It is a square minus 2ab plus b square. So you can see the 2ab, this term is negative in this expansion formula, that is a minus b bracket raised to square. Okay, and one more expansion formula which is basic for you, that is a square minus b square is equals to a plus b in bracket a minus b. Okay, so these are the three very basic expansion formulas. Okay, so you have to learn this formula. Now we are going to solve some questions, okay, by using this expansion formula. So you can see there are 4 questions enlisted. The first is we have to expand x plus 2y the whole square, then 2x minus 5y bracket raised to square, 98 square, and then 5n plus 3n, and in another bracket 5m minus 3m. Okay, so we will be expanding all these 4 terms. So let us start with the very first term. What is the term? X plus 2y bracket raised to square. Okay, so how we can expand this? We can expand this particular term by using the first formula. Okay, first expansion formula. What is the formula? A plus b bracket raised to square is equals to a square plus 2ab plus b square. So in this particular term x plus 2y, x is going to be our a. हम लोग x को क्या कंसिडर करेंगे? a कंसिडर करेंगे, और 2y को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? b कंसिडर करेंगे. ओके, सो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं? x को अगर हम लोग ने a कंसिडर किया है और 2y को हम लोग ने b कंसिडर किया है, तो जब हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? x plus 2y bracket raised to square is equals to x square plus 2 into x into 2y plus 2y raised to square. सो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं. सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को? वी विल राइट डाउन दिस term x plus 2y raised to square, okay, is equals to x हमारा क्या है? a है, तो a स्क्वायर में हम लोग क्या लेंगे? x स्क्वायर लेंगे. ओके, प्लस साइन है यहाँ पे बीच में, तो हमारे सारे टर्म्स पॉजिटिव आने वाले हैं. ओके, उसके बाद क्या है? 2 हमें लिखना है, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया. ओके, इनटू अभी हमें a चाहिए, तो a क्या है? हमने क्या कंसिडर किया? a को x कंसिडर किया, तो x आ गया, इनटू
अभी हमें b चाहिए, b क्या है हमारा 2y है, सो 2y आ गया प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है हमारा 2y है तो 2y का स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान दो कि क्या लिखा मैंने 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 2y। ओके, सो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा और x इंटू वाई क्या होगा एक्स वाई होगा। ओके, सिमिलरली 2 इंटू वाई स्क्वायर है, ये ध्यान में रखना है कि वाई स्क्वायर नहीं है, 2 इंटू वाई और कंप्लीट ब्रैकेट रेज़ टू स्क्वायर है। सो इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर लेना है और y का स्क्वायर लेना है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 x इंटू वाई एक्स वाई, ओके, प्लस 2 स्क्वायर 4 एंड y का स्क्वायर। ओके, सो एक्सपांशन क्या हुआ हमारा x प्लस 2y ब्रैकेट रेज़ टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन। नाउ वी विल सी द सेकंड question. Okay, what is the second sub question, 2x minus 5y bracket raised to square, so 2x minus 5y bracket raised to square है यहाँ पे। अगेन जो हमारा पहला टर्म है 2x उसे हम लोग a कंसिडर करेंगे और जो हमारा दूसरा टर्म है 5y उसे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, b कंसिडर करेंगे। ओके, सो ऐसे कंडीशंस में देखो हम लोग ने पहले टर्म को a कंसिडर किया, दूसरे टर्म को b कंसिडर किया है। ओके, सो इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 5y ब्रैकेट रेज़ टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस साइन आना चाहिए बीच में, क्यों, फॉर्मूला में क्या है a माइनस b ब्रैकेट रेज़ टू स्क्वायर, सो a स्क्वायर फिर उसके बाद माइनस का साइन है तो हम लोग ने माइनस का साइन लिया है यहाँ पे, उसके बाद 2 आ जाएगा हमारा इंटू क्या होगा a दैट इज 2x और वापस इंटू क्या होगा 5y होगा। ओके, और क्या है उसके बाद प्लस, तो प्लस का साइन और b स्क्वायर, तो हमारा b क्या है यहाँ पे 5y है, तो 5y का स्क्वायर क्या होगा 5y रेज़ टू स्क्वायर हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, तो इसको हम लोग अभी रिजॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हमारा आंसर जो कैसा आएगा अभी 2x का स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर। ओके, देन माइनस साइन 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है और 4 5 जा 20 होता है, तो 20 हो गया यहाँ पे, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, x इंटू वाई क्या होगा x y। ओके, फिर प्लस साइन और 5y स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 है। ओके, और y का स्क्वायर, तो हमारा एक्सपांशन क्या आया 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। ओके, so this is about the second sub question. Let us see the third sub question which is different from the first two questions. पहले दो questions में देखो कैसा था x plus 2y 2x minus 5y, so there are variables है हमारे पास x और y पहले दो सब क्वेश्चन में। अब जो तीसरा सब क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं है, सिंपल नंबर 98 स्क्वायर। अगर 98 की जगह पे मैंने 4 लिखा होता, 4 का स्क्वायर, तो हम सबको मालूम है 4 स्क्वायर क्या है 16 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है। अब 98 का स्क्वायर लिखना है तो ऑब्वियसली 98 का स्क्वायर हम सबको जबानी तो याद रहता नहीं है। ओके, वी डू नॉट लर्न द स्क्वायर्स फ्रॉम 100 till 100, so definitely we don't know what is the answer for this term 98 square, but by using the formula, okay, this particular formula or any formula you want, you can find the square of 98. Okay, so we will see the third sub question. So what is it, 98 ka square we have to find it. Okay, so now what I can write 98 as, देखो मैं 98 को 100 minus 2 लिख सकता हूँ। Can I write 98 as 100 minus 2? Yes, definitely, because 100 minus 2 क्या है 98 है। Okay, so how we can find this answer? Let us see.
Okay, I will write 98 square is equals to 100 minus 2 का square. What I have written? 98 square is equals to 100 minus 2 square. Okay, as 98 is nothing but 100 minus 2. So 100 minus 2 है. अब हमारे पास वापस दो टर्म आ गए, a आ गया हमारे पास और b आ गया हमारे पास. हम लोग 100 को a कंसिडर करेंगे और 2 को क्या कंसिडर करेंगे, b कंसिडर करेंगे. ओके, सो अभी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर. ओके, माइनस साइन रहेगा हमारा बीच में. 2ab, सो 2 into 100 into b क्या हमारा 2 है. ओके, प्लस b का स्क्वायर, सो b स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर. नाउ 100 का स्क्वायर क्या है, 10,000 है. ओके, माइनस साइन आ जाएगा हमारा एज इट इज. 2 into 2 क्या होता है, 4 होता है, और 4 into 100 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा. ओके, प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4. सो व्हाट वी हैव गॉट नाउ, 10,000 minus 400 plus 4. So 10,000 minus 400 कितना होगा, 10,000 में से 400 गए तो कितने बचे, 9,600, 9,600. ओके, प्लस 4. So what we get the answer as 9,604. What we have got, 9,604, and this is the answer for 98 square. देखो अगर हम लोग को कोई अचानक से पूछ ले 98 का स्क्वायर बताओ, okay, if someone asks you to tell the answer for this particular expansion or question 98 square, okay, definitely we are not learning the square of 98. So how we can find it, we can find this easily. Okay, there is another method that you can just multiply 98 into 98, but the amount of time this multiplication will take is going to be more than the amount of time to find the answer by using this particular method. Okay, so this particular method is fast and quick enough. Okay, then we will see the last sub question. So what is it, 5n plus 3n in another bracket 5n minus 3n. So we have two terms, okay, two bracket terms. So 5n plus 3n into 5n minus 3n. Okay, so we will write those terms, 5n plus 3n into 5n minus 3n. Okay, now you can see in both the brackets 5n is there, 3n is there. The only difference is the operator used in between these terms. Okay, so here addition sign is there, whereas in the another bracket minus sign is there. That means we can use this formula. Okay, here you can see a plus b, so in one bracket plus sign is there and in another bracket minus sign is there. So we can use this formula and find the answer to this particular question. Okay, so what we can write, 5n minus 3n, 5n minus 1, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आते हैं, इस इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या है फॉर्मूला देखो, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो हमारा a क्या है यहाँ पे 5n है और b क्या है हमारा यहाँ पे 3n. सो 5n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर हो गया. 5n का स्क्वायर क्या है, इट इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर 25 और n का स्क्वायर n स्क्वायर. ओके, और 3 का स्क्वायर क्या है 9 और n का स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर. ओके, so this is the expansion of this last sub question. Okay, so in today's lecture we are just observed or just studied the basic, the prerequisite of this chapter, that is chapter number 5, expansion formula. Okay, in the description you will find a link where you will get the formulas, all the expansion formula. Okay, note down those expansion formula in the notebook. You will also get the solution of these 4 sub questions, and along with it I am going to give 4 to 5 questions as a homework that you will solve. Okay, so this is it for the today's lecture. In the next lecture we are going to start the
new ways or new questions, okay, new expansions of this chapter. Okay, until then, goodbye.